Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aksa Aslam from Government Degree College, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. Dear students, there is a novel in your syllabus, Goodbye Mr. Chips. Today I will tell you about background of the novel, about writer, and about some important characters of this novel. Goodbye Mr. Chips is the most famous and best loved novel written by James Hilton, just in 4 days. It is a bestseller, dramatized and filmed. It is a proof that a little book can be a great book and deserves a prominent place in the gallery of literature. James Hilton was born in 1900 and died in 1944. He was a great novelist, journalist, and commentator. His famous novels are Goodbye, Mr. Chips, Catherine herself, and now Goodbye, Night Without Armor, Lost Horizon, Random Harnessed, Time and Time Again. जेम्स हिल्टन ने अंग्रेजी अदब की ग्रांकदर खिदमात सरअंजाम दी हैं। वह एक सहाफ़ी, नावल निगार और तबसरा निगार था। उसकी सलाहियतों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका सिर्फ 4 दिन में लिखा हुआ नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स इंतहाई मकबूल हुआ। ये न सिर्फ ये सिलेबस का हिस्सा है, बल्कि इस पर ड्रामे और फिल्में भी बनाई गईं। Goodbye, Mr. Chips is a biographical novel. It deals with the life of Mr. Chips. It is divided into 18 chapters. Mr. Chips was a retired school teacher and served in Brookfield for 45 years. अब मैं आपको ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में बता देती हूँ। ये स्कूल कब और कहाँ बना, किस किस्म का स्कूल था। असल में ये एक कस्बा था जहाँ पर यह स्कूल मौजूद था। Brookfield was a small village. It was situated in beautiful marshy districts on the east coast of England. It was surrounded by ancient elms. In autumn, there used to be creepers everywhere. It was an open countryside. East winds often blew from the sea. There was a grammar school in the village. It was an old foundation. It was established in the reign of Queen Elizabeth. As a grammar school, it could not become the famous as Harrow or Eton. At the time of George I, its main structure was built. Many additions were also made. Sometimes the school progressed and sometimes declined, both in number and repute. But it could not be raised to front rank status. It was, however, a good school of the second rank. Several noble families supported it. This school made its contribution to England. It supplied many history-making men of the age. It produced judges, members of parliament, administrators, peers, and bishops. Mostly it turned out merchants, manufacturers, and professional men. When the First World War broke out in 1914, many teachers and students joined armed forces. Many of them died for their country. Its grounds were used for training purposes, so we can say that Brookfield contributed to the glory of England during peace and war. ब्रुकफील्ड अब कालादम हो चुका है। ये इंग्लैंड के मरकज़ में वाक़ई एक छोटा सा कस्बा था। ये दलदली इलाका था जिसका वसी रकबा सब्ज़े से ढका हुआ था। मलका एलिज़ाबेथ के दौर में यहाँ ब्रुकफील्ड के नाम से एक स्कूल कायम हुआ। इसकी पूरी इमारत दरख्तों से घिरी हुई थी। इसके बहुत से खेल के मैदान थे। ब्रुकफील्ड, इसमें कोई शक नहीं कि एक अच्छा स्कूल था, लेकिन ये कभी भी एटन और हैरो जैसी शोहरत हासिल न कर सका। एटन और हैरो उस वक्त के मशहूर स्कूल थे। ताहम ब्रुकफील्ड एक दरमियाने दर्जे का अच्छा स्कूल था। जॉर्ज अव्वल के दौर में स्कूल की बड़ी इमारत गिरा दी गई और बड़े इजाफे के साथ दोबारा तामीर की गई। इसने मुल्क की तामीर में बड़ा किरदार अदा किया और मुल्की मामलात में हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया।
पहली जंग अजीम के दौरान इसके मैदान फौजी तरबियत के लिए इस्तेमाल किए गए। इसके असातिज़ा और तलबा ने मुसल्ह अफवाज में शिरकत की और अपने मुल्क की खातिर लड़े। आम हड़ताल के दौरान तलबा और असातिज़ा ने सप्लाई लाइन को बहाल रखा और प्राइवेट और सरकारी अमला की हिफाजत की। ये ब्रुकफील्ड के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स से जो मैंने आपको बताए। अब इसके टाइटल की तरफ आते हैं। टाइटल ऑफ द नॉवल इज़ गुड बाय मिस्टर चिप्स। The words "Goodbye, Mr. Chips" was spoken to Mr. Chips by Catherine on the night before her marriage. Then, many years later, a little boy, Linford, who came to visit Mr. Chips, repeated the same words to him on the night before his death. Mr. Chips' marriage and his death are most important events of the novel. So are these words. Mr. Chips never forget these words. खुदा हाफिज मिस्टर चिप्स, ये अल्फाज कैथराइन ने शादी से एक रात पहले मिस्टर चिप्स से कहे थे। कई सालों बाद एक छोटे से लड़के लिन फॉर्ड ने दोहराए। मिस्टर चिप्स को लगा उसकी ज़िंदगी एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रही है। ये अल्फाज उसके लिए बहुत अहमियत के हामिल थे। इसी रात मिस्टर चिप्स की वफ़ात हो जाती है। इस लिहाज से ये टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुड बाय मिस्टर चिप्स के अल्फाज मिस्टर चिप्स के लिए बहुत ही अहम थे। अब इसके करैक्टर्स की तरफ आते हैं। मिस्टर चिप्स जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टर है और नावल का मरकज़ी किरदार है। मिस्टर चिप्स का पूरा नाम मिस्टर चिपिंग्स था। ये सबसे अहम किरदार है और नावल का हीरो है। अहम बात यह है कि इस नावल का हीरो रिवायती किस्म के हीरो से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कोई नाइट, प्रिंस, किंग, कोई सोल्जर, कोई ऑफिसर नहीं। ना ही सोसाइटी में कोई नुमाया मकाम रखता है, ना जागीरदार है, ना सरमायादार है, बल्कि एक आम सा इंसान है। ना इस किस्म की शख्सियत है कि लड़कियां इस पर फरेफ्ता होती हों। वो एक सादा सा इंसान है और एक स्कूल टीचर है। इसके अंदर वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो एक अच्छे मुखलिस बेगर्ज इंसान में होती हैं। यह नावल मिस्टर चिप्स के जज्बात की तर्जुमानी करता है, बल्कि कहना चाहिए इट इज़ अ नावल ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस, द प्योर एंड सैक्रेड फीलिंग्स, एंड मिस्टर चिप्स इज स्पोक्समैन ऑफ दीज फीलिंग्स। मिस्टर चिप्स के करैक्टर की तरफ आते हैं और अब मैं आपको उसके करैक्टर्स के जो अहम पॉइंट्स हैं वो बताती हूँ। Mr. Chippings, lovingly called Mr. Chips, is the central character of the novel. The novel is about his life at Brookfield as a teacher. He joined Brookfield Grammar School in 1870 at the age of 22. When the novel opens, he was an old man of 65. He worked in the school for 45 years and came to be looked upon as an institution. He knew everything and everyone in Brookfield. He was a legend known to everybody. His He married at the age of 48, but his wife Catherine died 2 years after. He died at the age of 85. He led a very peaceful life, which was decently closed. Mr. Chips was a Cambridge graduate, but his degree was not very good. Though he was not very intelligent and bright, yet he was very hardworking and gentle, which are the qualities that a good teacher must have. He lived and worked for his students. His sincerity and devotion to work made him the favorite of the boys. First, he could not control the class, but later on, with the help of his wife, he improved his discipline. He loved his profession and his students. He treated them like his own children. When people felt sorry for his being childless, he said that all his students were his children. He helped his students develop their character. His students became great men and often came to meet him, but he always talked to them like a teacher. He knew all his students and even the names of their fathers and grandfathers, some of whom had been his pupils. In short, he was the most popular teacher in the school. At his row with Ralston, he was favored by the boys, their parents, and teachers. First, Mr. Chips was a dry person, but after his marriage with Catherine, his sense of humor developed.
He began to make little jokes. He talked in a funny way. He talked of the weaknesses of his students in a humorous manner. He used nicknames for his students, which became famous throughout the school. People liked his strange remarks about them and always waited for his latest jokes. During war days, he boosted up their morale of his students by making humorous remarks about the Germans and their bombing. In short, people did not laugh at him but with him. Mr. Chips was a simple fellow as he knew his weaknesses. He had no high ambitions in life. He was at peace with himself and with life. He had no desire to get a high position in life. He never desired what he did not deserve. At the end of his career, he refused to be appointed official head of the school. He continued serving as the acting head. After retirement, he led a life of peace and calm. Mr. Chips was a conservative in his views. He did not like new changes. He could not understand new developments, new inventions like cinema and bicycle, women liberation. Old traditions were sacred to him. Although his wife brought many changes in him, yet basically he was a man of the past. He led his retired life dreaming of the past. जेम्स हिल्टन अपने नॉवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स में हमें एक क्लासिकल उस्ताद जिसका नाम मिस्टर चिपिंग है और जिन्हें चिप्स कहा जाता है के बारे में बताता है। उन्होंने 1876 में ब्रुकफील्ड स्कूल में शमूलियत अख्तियार की। इससे पहले एक साल वो मेलबरी स्कूल में पढ़ाते रहे थे। इस वक्त वो ख्वाहिशात रखने वाले एक 22 साल के नौजवान थे। 40 बरस की उम्र में उनकी जड़ें इस इदारे में मजबूत हो गईं। 50 बरस की उम्र में वो स्टाफ के हेड बन गए। 60 बरस की उम्र में उनकी हैसियत ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन की थी। 1913 में वो रिटायर हुए। उन्हें एक राइटिंग टेबल, एक क्लॉक और एक चेक तोहफतन पेश किया गया और अच्छी पेंशन भी दी गई। जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो उन्हें वापस बुला लिया गया और स्कूल की हेडमास्टरशिप की भी पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने हेडमास्टर बनने से इनकार कर दिया। चिप्स 1918 में जंग के बाद मुकम्मल रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद चिप्स ने स्कूल के करीब ही मिसेस विकेट के घर क़याम किया। वो ब्रुकफील्ड में पढ़ाना, अपने तलबा और अपने बीवी को याद करके लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। चिप्स अपना वक्त स्कूल की घंटियों के मुताबिक रखते थे। इस तरह जब सुबह स्कूल की घंटी बजती तो वो चाय पीते, जब डिनर की घंटी बजती तो डिनर करते और बिस्तर पर लेटकर जासूसी नावल पढ़ते। शाम को चिप्स लड़कों के खेल देखने के लिए खेल के मैदान में जाते, फिर वो लड़कों के साथ बातें करते, खुश होते। स्कूल के डिनर्स और पार्टियों में शरीक होते, जहां वो हस्ब मामूल मजाक भी किया करते। पुराने लड़कों के क्लब के सदर की हैसियत से वो लंदन में उनकी मीटिंग्स में भी शरीक होते। चिप्स नए लड़कों को और नए टीचर्स को चाय पर इनवाइट करते, उन्हें चाय पिलाते, केक पेश करते और उनसे अपने पुराने शागिर्दों की बातें करते और मजाक करते। उन्होंने ब्रुकफील्ड के डायरेक्टरी भी मुरतब करने का काम शुरू किया, जिसमें तमाम टीचर्स और तलबा के नाम थे और स्कूल के रिसाले के लिए मज़ामीन भी लिखे। इसके अलावा उन्हें जासूसी नावल्स पढ़ने का शौक़ था। अखबार बाकायदगी से पढ़ते और उनको विज़िट करने के लिए जो स्कूल टीचर्स और जो बच्चे आते उनकी बातें सुनते, उनके मुश्किलात और मसाइल को हल करने की कोशिश करते और उन्हें चाय पिलाते। ये मिस्टर चिप्स के करैक्टर की जो है वो अहम उनके नकात थे या अहम पॉइंट्स थे। इस नावल का दूसरा अहम करैक्टर कैथराइन ब्रिजेस है। कैथराइन ब्रिजेस जो है मिस्टर चिप्स की वाइफ थी और उससे उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन ये सबसे दिलचस्प और सबसे अट्रैक्टिव करैक्टर है। अब इस करैक्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ। The most attractive and appealing character in the novel is of Catherine Bridges. She had a fair complexion and golden hair. She was a beautiful girl. She was 25 when she met Mr. Chips at Wastel Head in 1896. Mr. Chips was then 48 and Catherine looked like a girl young enough to be Mr. Chips' daughter.
She was then a governess out of job with a little money saved up. She died in childbirth in 1898, just 2 years after her marriage with Mr. Chips. She was a modern woman. Catherine Bridges was very free, frank, and fearless. She was modern in all respects. She was fond of riding and singing. She was very social and broad minded. She was well educated and desired the other women to receive higher education. She was working hard for the freedom of women and the right for vote. Another important point of her character is her literary taste. Catherine had a great literary taste. She was in close touch with the writings of the famous authors of revolutionary spirit like Ibsen, Bernard Shaw, and William Morris. She loved and respected Mr. Chips for his noble profession of teaching and literary bent of mind. Catherine was a kind hearted woman. She was kind at heart. When she came to know that Mr. Chips had twisted his ankle for her sake, she visited him regularly, consoled and nursed him. Soon they fell in love with each other. Eventually, they were married. After marriage, she exercised a very healthy influence upon Mr. Chips and made him a new man. She broadened his outlook on life and pleaded leniency for the boys under his charge. Another important point of her character is her radical ideas. She was radical and socialist from the core of her heart. She believed that there should be no difference between the rich and the poor. She had no regard for wealth. She always spoke vehemently in favor of socialism. She arranged a friendly football match between the poor boys of the mission school and the rich boys of the Brookfield school. It proved a successful meeting between the two classes to bridge the class gap. Catherine was a good wife. Catherine proved a good wife. She was very faithful to her husband. Before marriage, Mr. Chips was unsocial. She made him social, active, and broad minded. He was cold and lonely. She gave him all the warmth of life. As a result, Mr. Chips became very popular in Brookfield. Like a good wife, she always gave Mr. Chips a sound advice in all matters. But her life was as short as it was beautiful. Just 2 years after her marriage, she died in a childbirth. She appeared like a shooting star on the skies of Brookfield. To sum up, Catherine was a great lady with lofty and noble ideas. इस नावल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, दिलकश और मुतासिर किरदार कैथरीन ब्रिजेस का है। 1896 में जब वो वेस्टल हेड में मिस्टर चिप्स से मिली तो उसकी उम्र 25 बरस थी। इस वक्त मिस्टर चिप्स की उम्र 48 बरस थी और कैथरीन इतनी नौजवान थी कि चिप्स की बेटी लगती थी। इस वक्त वो पेशे के लिहाज से गवर्नेंस यानी आया थी और जो रकम उसने बचाई थी इससे वो ग्रेट केबल की तफरीह के लिए आई थी। मिस्टर चिप्स से शादी के सिर्फ 2 ही बरस बाद वो बच्चे की पैदाइश के दौरान फौत हो गई। कैथरीन एक मॉडर्न खातून थी। कैथरीन ब्रिजेस आज़ाद, साफ़गो और निडर थी। वो हर लिहाज से मॉडर्न थी। वो राइडिंग और गाने की बड़ी शौकीन थी। वो बड़ी समाजी और वसी नज़र थी, तालीम याफ्ता थी और चाहती थी कि दूसरी औरतें भी आला तालीम हासिल करें। वो औरतों की आज़ादी, उनके वोट के हक के लिए बड़ी कोशिश कर रही थी। जिस वक्त ये नावल लिखा गया था उस वक्त इंग्लैंड में ख़वातीन को वोट देने का हक नहीं था और ना ही उनका तालीम हासिल करना अच्छी नज़र से देखा जाता था। तो उस वक्त के दौर में इसके ख़यालात बहुत ही अच्छे मॉडर्न थे, या वो आज़ाद ख्याल हम उसको कह सकते हैं, और वो ख़वातीन के हक के लिए आवाज़ उठाने वाली औरत थी। उसके किरदार की एक और अहम खसूसियत यह है कि वो अदबी ज़ौक़ रखती थी। वो बड़े अदबी ज़ौक़ की मालिका थी। इनकलाबी नज़रियात वाले मशहूर मुसन्निफ़ीन जैसे कि इब्सन, बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस की तहरीरों से बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। वो मिस्टर चिप्स से मोहब्बत करती थी, उसका एहतराम भी करती थी और उसके पढ़ाने के पेशे और उसके अदबी ज़ौक़ की वजह से इस तरह के ख़यालात रखती थी। मिस्टर चिप्स कैथरीन जो है वो बहुत ही रहम दिल
اور کائنڈ ہارٹڈ تھی، دلی طور پر بڑی مہربان تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ مسٹر چپس کے گھٹنے میں اس کی وجہ سے موچ آئی تھی تو باقاعدگی سے اسے ملتی رہی، اس کی حوصلہ افزائی اور نگہداشت کرتی رہی۔ اس سے مسٹر چپس پر بڑا صحت مندانہ اثر ڈالا اور اسے ایک نیا آدمی بنا دیا۔ اس نے زندگی کے بارے میں اس کے نظریات وسیع کر دیے اور وہ لڑکے جو اس کی نگرانی میں تھے ان سے نرمی کرنے کے لیے کہا۔ انقلابی قسم کی خاتون تھی اور اس کے سوشلسٹ آئیڈیاز سے اس کا یقین تھا کہ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دولت کی پرواہ نہ کرتی تھی، وہ بڑے جذبے سے سوشلزم کے حق میں بولتی تھی۔ اس نے بروک فیلڈ اسکول کے امیر لڑکوں اور مشن اسکول کے غریب لڑکوں کے درمیان ایک دوستانہ فٹ بال میچ کا اہتمام کیا۔ طبقاتی فرق کو پر کرنے کے لیے یہ میٹنگ کامیاب ثابت ہوئی۔ اس کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ وہ اپنے خاوند کی بڑی وفادار تھی۔ شادی سے پہلے مسٹر چپس ایک غیر سماجی قسم کا انسان تھا، ان سوشل تھا، سرد مہر اور تنہا تھا۔ اس نے اسے زندگی کی حرارت دی۔ نتیجے کے طور پر مسٹر چپس بروک فیلڈ میں بڑے مقبول ہو گئے اور ایک اچھی بیوی کی طرح اس نے ہمیشہ مسٹر چپس کو تمام معاملات میں اچھا مشورہ دیا۔ اس کی زندگی خوبصورت تھی لیکن یہ جلد ہی ختم ہو گئی۔ اپنی شادی کے 2 برس بعد ہی بچے کی ولادت کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ مختصراً کیتھرائن ایک عظیم خاتون تھی جو بڑے بلند اور عمدہ خیالات رکھتی تھی۔ Dear students, it was part A of the lecture. In this lecture, I told you about background of Brookfield, about its writer, and 2 most important characters, Mr. Chips and Catherine. Mr. Chips is hero of the novel, and Catherine Pages is his wife. The most interesting and most loving character is of Catherine. اس حصے میں آپ کو مسٹر چپس اور کیتھرائن کے بارے میں بتایا گیا ہے، ناول کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس ناول میں اور بھی بہت سے کریکٹرز ہیں جو چیپٹر وائز ہمارے سامنے آتے ہیں اور وہ کریکٹرز بھی امپورٹنٹ ہیں۔ اب اگلے حصے میں جو ہے ہم ان کریکٹرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور مسٹر چپس اور کیتھرائن کے کریکٹرز کا موازنہ بھی کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔